We all know that what is the equilibrium condition? It is when the aggregate demand is equals to the aggregate supply. And what will be the disequilibrium condition? When the aggregate demand is not equals to aggregate supply, and when the aggregate demand is not equals to aggregate supply, then two situations can happen. जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगा, फर्स्ट सिचुएशन. सेकंड सिचुएशन, या तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होगा. यही दो चीजें हो सकती हैं, कोई थर्ड चीज तो हो नहीं सकती डिसइक्विलिब्रियम में. ओके, so when your aggregate demand is greater than your aggregate supply, it is known as excess demand. We already know that. We have discussed it in chapter number equilibrium. When your aggregate demand is greater than your aggregate supply, then your economy will be at the level of excess demand. And when your aggregate supply is greater than the aggregate demand, then your economy will be in the situation of excess supply, or we also call it deficient demand. That means demand mein kami, the lackness in the demand. Now, how can we show these two situations on this given diagram? The situation of excess demand and the situation of excess supply. Now, first see the situation of excess demand. See the aggregate demand curve. This is your aggregate demand curve. This is your aggregate supply curve. Below the point y1 या E के नीचे कोई भी point देखो, E के नीचे कोई भी पॉइंट देखो, हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व ज्यादा है और हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व कम है. E के नीचे कोई भी पॉइंट देखो, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है. तो E के नीचे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई टू वन पॉइंट ओवर है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, and I have drawn a perpendicular till here and I have named it as y2. All right. So यहाँ पे ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है और ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है. फॉर एग्जाम्पल आई नेम इट एज ए एंड बी पॉइंट्स. तो ये जो हमारा ए और बी का डिफरेंस होगा, यही हमारा एक्सेस डिमांड हो जाएगा. ऑलराइट, सो एट दिस पॉइंट ऑफ लेवल वी आर हैविंग एक्सेस डिमांड which is equals to AB. Okay, we are having excess demand which is equals to AB because we can see that aggregate demand is here, aggregate supply is here, and the difference between aggregate demand and aggregate supply is equals to the AB. So thus the excess demand will be also be equals to AB. So now what will happen? What things will happen? That the equilibrium will be restored again. Again, this aggregate demand and aggregate supply will be restored again. See, whenever there is excess demand in the economy, what will happen? There will be more supply. We all know there will be more supply. There will be more production. There will be more employment. There will be more output. That means to produce that goods, to satisfy that excess demand, producers will demand more of labor. Producers will demand more of raw materials. Okay, it will increase the employment, and when the employment will increase, the production of goods and services will increase, the output will increase, the economy will, the national income will increase. It will increase to the rightward from y2, and it will keep on increasing till y1. वो जब तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक हमारा इक्विलिब्रियम फिर से रिस्टोर नहीं हो जाता. Because at this point it is beneficial for the producers. They would like to increase their production because stocks जल्दी जल्दी कम हो रही होंगी, तो उनको और प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन के लिए they will require more employment. तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, तो हमारा जो इकोनॉमी है it will move, the national income of the economy will increase. And it will increase till again the aggregate demand and aggregate supply gets equal, or again the equilibrium is restored eventually. This was the case. What will happen in case of excess demand? Now let us see
what will happen if an economy faces the situation of excess supply? So E के ऊपर कोई भी पॉइंट देखो, see any point above E, यहाँ पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर ऊपर लाई कर रहा है और हमारा एग्रीगेट डिमांड कर नीचे लाई कर रहा है. दैट मींस E के ऊपर कोई भी पॉइंट हम लेंगे, यहाँ पे हमारी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है. So take any point above the equilibrium point and draw a perpendicular and name it as Y3, and you can see at this, यहाँ पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई है और यहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड. दैट मीन्स हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कर्व है. दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड कर्व है. दैट मीन्स यहाँ पे सिचुएशन कौन सी होगी? एक्सेस सप्लाई की. और इसको अगर हम नाम दे दें तो हमारा यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई है G, मार्केट इज एट पॉइंट G, और ये हमारा एक्सेस डिमांड, यहाँ पे हमारा डिमांड है, मार्केट एज पॉइंट H. तो यहाँ पे जो हमारी एक्सेस सप्लाई होगी, द एक्सेस सप्लाई एट दिस पॉइंट, it will be equals to GH. Okay, क्योंकि ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है. The difference between aggregate supply and aggregate demand is equals to GH. Now, what will happen when there is excess supply in the economy? सामान बहुत ज्यादा है but बिक नहीं रहा है. So there will be more unsold stock piling up with the producers. Producer के पास ऐसा सामान इकट्ठा होता रहेगा जो बिक नहीं रहा हो, because there is no demand in the market. मार्केट में डिमांड ही नहीं है. तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर विल रिड्यूस द प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग, क्योंकि वो चाहेगा कि पहले उसकी जो इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, ओके, जो इसकी स्टॉक पाइल अप हो रही है वो बिक जाए. तो उसके लिए वो लेबर को भी काम से हटा देगा, एम्प्लॉयमेंट कम कर देगा, लेबर को ले ऑफ कर देगा. दैट इज हैपनिंग टुडे. व्हाट वी आर सीइंग, व्हाई द एम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड टुडे? Okay, because there is excess supply in the economy. There is no demand in the economy. There is deficiency in demand in the economy. So the producers are thinking that they should sell off their piled up stock first, and they have laid off the workers. Okay, because जब वर्कर आएगा तो उसको पेमेंट भी देना पड़ेगा, और जब कुछ नया प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो पेमेंट देके कंपनीज क्या करेंगी? Alright. So they will reduce they will lay off the workers, और जब वो workers को lay off करेंगे, हमारा national income कम होगी, national output कम होगा, and again the national income and output of the economy will reduce, and it will keep on decreasing till again the equilibrium is restored. The aggregate demand and aggregate supply situation is restored again. Okay. So this was the all methodology that whenever there is disequilibrium in the economy, okay, the economy tends to move towards equilibrium. There are certain mechanics which automatically it leads to the movement towards the equilibrium. All right.